नमस्कार, फैम हेल्थ में आपका आज फिर से स्वागत है। हमारी इस इंटरव्यूज की श्रृंखला में आज हम एक ऐसा मुद्दा लेके आए हैं जो बहुत ही करंट है, लेकिन हमारे लिए और हमारे दिमागी संतुलन के लिए ये बहुत बहुत अहम है। और इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं वेरी स्पेशल एक्सपर्ट मिस डिसेंसी राजपूत, जो हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विमेंस नयति हॉस्पिटल की। Welcome to the program, Decency, and thank you so Thank you. much for sparing time to join us today. Thank you for inviting me. डिसेंसी जी, आपको सबसे पहले तो मैं ये पूछूं कि अभी पैंडेमिक के बगैर तो हम आगे बात कर ही नहीं सकते हैं। पैंडेमिक का Sure. इफ आई कैन से इधर 3.0 या 4.0 चल रहा है इस समय पर। Right. लोग इस वेव को 3-4 बार झेल चुके हैं, एंड नॉट जस्ट इंडिया में, बाहर वर्ल्ड वाइड। तो Right. एक हम ही नहीं है, इंडियन रेस, बाकी लोग सब लोग जूझ रहे हैं इससे। तो मेरा सवाल आपसे ये है, इज दिस हियर टू स्टे? हम लोग अपने मेंटल जो फैकल्टीज हैं, अपने पैनिक रिलेटेड जो फैकल्टीज हैं, इन सबको आज इस फोर्थ वेव में कैसे संभालें? इस पे पहले थोड़ा सा आप बैकग्राउंड देके, इफ यू कैन गिव अस सम टिप्स प्लीज। So, one, firstly, जैसे कि आपने कहा, is it here to stay? It feels like, and most experts agree that COVID is here to stay. And in fact, countries like US have already started working on how to live with COVID, right? So, like we were talking last year, that what is the new normal, right? Yes, this is the new normal. But now the important part is that we neither take it too lightly, nor do we take it so seriously that it affects our mental health. Okay. So physical health, yes, it affects kahin na kahin, kabhi na kabhi. Kisi na kisi wajah se, if we have contracted COVID, yes, it will affect in some way or the other. Zyadatar case aajkal, especially Omicron ke, are not being hospitalized, have been either, asymptomatic or with very minor symptoms such as cold or congestion like symptoms, which has not been very, very difficult. But of course, there have been talks about कि एक और वेरिएंट आएगा या फिर डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन हो जाएगा या so on and so forth. Yes, there are all calculations and there are talks about it. But as a person who is going through this, as all of us together, we have to understand the fine line, like we were talking, कि कहाँ ये हमारी mental health को affect कर रहा है. Now, एक तो हो जाती है कॉम्प्लेसेंसी वेयर वी टॉक अबाउट कि आजकल लोगों को कम फर्क पड़ रहा है, मार्केट में अभी भी उतने ही लोग हैं, डिस्पाइट लॉकडाउन लोग बहुत निकल रहे हैं एंड ऑल. इट्स ट्रू, यस, कॉम्प्लेसेंसी इज समथिंग वी शुडंट गेट इनटू, दैट इज ट्रू. ऑफ कोर्स हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम मास्क पहने, हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के चलें, हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम बहुत ज्यादा बड़ी गैदरिंग्स ना करें, हमें ध्यान देने की जरूरत है. लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम दिन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाएंगे कि हमें लाइफ में आगे कुछ कर नहीं पाएंगे, इकोनॉमी में इशू हो जाएगा या सो ऑन. सो बेसिकली हैविंग दैट फाइन लाइन कि कहाँ वो हमारी फंक्शनैलिटी को अफेक्ट कर रहा है, वो समझना बहुत जरूरी है. जैसे ही आप ये देखें कि ज्यादा न्यूज देखने से, ज्यादा इस बारे में बातें करने, सोचने या फिर फॉलो करने से, अगर आपकी दिनचर्या में दिक्कत आ रही है, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बार बार इसी बारे में सोच रही हूँ या मैं बार बार इसी बारे में सोच रहा हूँ या मैं बात ही सिर्फ इसी बारे में कर रहा हूँ या मेरा थॉट प्रोसेस ही इधर चला गया है कि व्हाट इफ, अगर मेरा हर थॉट व्हाट इफ से शुरू हो रहा है, that means there's a problem. That means I have let it get to me. I have let it come to a point where it is creating a bit of difficulty in my personal and professional life. So if it becomes a difficulty in personal, professional, or social life, then that is something we have to pay attention to. So that is a red flag that we are supposed to look at. डिसेंसी जी, आप एक्सपर्ट हैं इस मेंटल हेल्थ के फील्ड में। पिछले 2 साल से इतनी कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं
एक्सेप्टेंस बोला जा रहा है कि बढ़ गया है वगैरह वगैरह। तो 2 साल में लास्ट और अभी रिसेंट पास्ट में आपको किस टाइप के ज़्यादा यू नो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स दैट पीपल आर कमिंग टू यू विद, एंड इज इट ओनली टू डू विद द पैंडेमिक या जनरली बिकॉज अवेयरनेस बढ़ गया है, लोग बस अब थोड़ा एक्सेप्ट करके उसका हेल्प सीक आउट करने लगे हैं? So reason twofold है. First, to answer your first question कि क्या ज्यादा देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है एंजाइटी, लो मूड, यू नो जो हमारे टीनेजर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, डिफिकल्टी इन स्टडिंग, उसकी वजह से एंजाइटी, उसकी वजह से लो मूड, प्रोक्रास्टिनेट करने की वजह से गेटिंग इनटू अ साइकिल ऑफ नॉट बीइंग प्रोडक्टिव, नॉट बीइंग एबल टू स्टडी, नॉट बीइंग एबल टू वर्क प्रॉपर्ली बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन हो गया है. So mostly when you look at the age group of adolescents or college goers or school going children, so सबसे ज़्यादा issues आ रहे हैं because of anxiety, because of low mood, because of lack of that interaction, you know, interaction in present. So because of all that, इस एज ग्रुप में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है. When we go further, when we look at the working population, yes, a lot of our working population is overworked. Hence, a lot of increased stress, increased anxiety, lack of sleep is become very common. क्योंकि वो घर की और वर्क की वो बाउंड्री नहीं रही. That time when you come back home and you know that, okay, I'm not going to, open my PC and that is it. You had that balance. That balance has been moved around, you know. वो एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती थी when you reached home. Now that boundary is not there. You know how nowadays it has become a joke that how Zoom has made work possible everywhere and hence work is possible every time. So because of that, it has become pervasive in life. You know, when we say pervasive, it has entered every part of life. So ऐसी चीजों की वजह से hence the working population is suffering. Because of all this, we are also seeing relationship issues. The amount of time spent together has increased. The amount of time spent apart, fondly apart, has decreased. So because of which, a lot of relationship issues are also being seen. Also, जैसे कि आपने कहा कि attention में भी आ गया है, क्योंकि हम साथ में रह रहे हैं, तो कुछ चीजें जो हम झेल नहीं सकते थे पहले, या we wouldn't have agreed to, but we used to run away, we used to avoid it. कि अच्छा ठीक है, I'll just get out of here, or I'll not do this, I'll not talk about it, but I'll get out of here, or I'll ignore it. But now because everybody is staying together in their homes, and you have to understand and live with it and overcome it together, so it has come to attention also now. So it's a multifaceted thing. And yes, now we can see that how mental health has been a pandemic, but it is just coming in front of us that yes, you know it is there and it needs a lot of attention. That is that. सो रिसेंटली अगले कुछ सालों में, एज द रिसर्च दैट यू एज अ कम्युनिटी मस्ट बी डूइंग, where do you see this going for mankind in general, from the perspective more of the fact that क्या आपको लगता है कि सिर उठा के लोग बस क्लिनिक में अपॉइंटमेंट लेके वॉक इन कर जाएंगे लोगों बहुत इजीली, या अभी वी आर स्टिल वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम दैट येट? We're a little far away, but not that far as we were 2 3 years ago. We're not that far. The sheer number of patients that I see in a day who come to me and ask me, "Are क्या मैं पागल हूँ जो मैं आपके पास आई हूँ या आया हूँ?" has decreased. Wow. The sheer number of people who come to me and say that I think I needed help for a very long time, but I think I should get it now. Now is the time to do it, has increased. The sheer number of adolescents, students who have been asking for help from their parents that they need to see a psychologist or a psychiatrist, now that their parents had to see them 24/7, they were brought to the help that they needed. So that has increased.
because of all that increase, yes, it will get into a butterfly effect of, how, come more generations will be more easier. It will be easier on them to communicate their problems. It will be easier for the elders to understand their problems. And for millennials, it will be easier to accept that you're not feeling okay and it is okay to seek help. I think sabse bada issue is, am I okay? And if I am not feeling okay, then it is okay to seek help. So that being the, motto, it is becoming a thing now, and it is a very, very good progress, I'll say. A very good progress. जितनी भी हम हेल्पलाइंस की भी बात करते हैं, the number of calls on those helplines have increased now. The number of people seeking help from online platforms, from physical clinics, from hospitals like Ramans, the number of people have increased. That is true, and the awareness has increased. That is true. रिसेंटली अगर हम बच्चों की बात करें, और आपने बहुत अच्छे से काफ़ी बच्चों के बारे में एक दो चीज़ें बताई हैं, एंड आई वांट टू डेल्व फर्दर इनटू दिस। इंडिया में अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है बिकॉज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया, or at least the north part of India, some schools, kids have not gone to school for 600 days. We Yes, have lost that much amount of yes, studies, and going yes, physically meeting some other kids your age, etc. And this has yes. happened from the junior most classes to the senior most classes. So Right. what kind of an effect is this likely to have on children, and how would you, what is it that you'd suggest? Because we have no clue when it's going to start, when school is going to open properly. So what would you recommend to such parents? How can they work with their children? So when we talk about, I work a lot with adolescents. When we talk about adolescents, most parents have been complaining that they just don't study because now, however harsh it sounds, it is easier to Google everything. When we used to go to colleges, when we used to go to school, it was the person or the children was sitting in that class where the teacher was asking the question, and they would either have to remember the answer or look it up in a book or notes. Like, but now it is so easy that on one screen I'm talking to a teacher and on the other one I'm Googling the answer. So technically I know it, but actually I don't know it, right? So because of that, the intention or the want to learn more has decreased. And especially the only online platform, if you talk to the students or the children, they often say that it doesn't engage them. It doesn't bound them into that environment of learning. So because, so we often talk about, in therapy especially, we talk about hygiene, work hygiene, sleep hygiene. So it doesn't mean safai. It just simply means if I work at this table, if I see people for therapy in this room, then I see people for therapy in this room. I'm not eating here or sleeping here or, doing other things here. So this has that environment, this has that purpose. Similarly, a classroom has a purpose of the studying, of the knowledge, of the exchange of ideas. Now that is not present. So that hygiene is lost. Now the child is studying in a corner of the room where there is a food plate also, where there is a game also, and outside the room, that is children who are privileged to have that space. Mostly वो शोर शराबा उनके चारों तरफ है, अगर privilege है तो वो शोर शराबा उस कमरे से बाहर है. So imagine 10 people you really want to engage with, and even two people who you really want to engage with are talking outside, and you have to study online. So imagine the mindset of the child. Will that child study, and are we to blame that child who is not able to study? We have to also look at it from the perspective of the children. We are only looking at it from the perspective of the parents, unfortunately, that okay, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, कैसे पढ़ाएं? But the point is, why is the child not studying? Is the child getting bored? Is the child not getting the space? Is the child too anxious because of so much exposure to screen? We all know how much exposure to screen, is difficult in general. So we have to find the reality of
why this particular child. Every child has different reasons. Every child is suffering somewhere or the other. Like you said, 600 days. Few children have not seen a classroom for so long. So imagine the amount of haze, I'll call it a haze, a fog that is present, that lack of clarity that is there for children. So we're supposed to clear that for them. And the best way to do is, first step that you can do as parents or as guardians, is create a space that is theirs to study, to work, to play. So it is separate, even if it is a corner in the house, but it is theirs, it belongs to them, and it is for that particular purpose. If it is for studying, it is for studying. So when we were kids, how parents used to scold us to sit on a table and chair to write and study. At least I was scolded for that. I would always want to sit in bed and study, and my father would always tell me, "No, you will study on a table and chair. You will not study on a bed." And today, when I learned all this, and I'm a therapist, I realized that is true. That is very, very true. So that is one thing that we need to do for the children. We need to create the environment of that classroom. If we can't give them that classroom, that is very, very important. सो डिसेंसी अगर हम पेरेंट्स हमें दिख रहा है कि बच्चा अनकंफर्टेबल है, ध्यान नहीं जा रहा है पढ़ाई में, ऐसे अनेकों छोटी छोटी बड़ी बड़ी अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं बच्चों में। क्या ये सिम्टम्स हैं कि वन नीड्स टू रियली इंटरवीन? और इसके अलावा क्या सिम्टम्स हैं जो आपको देखने चाहिए, ध्यान रखने चाहिए बिफोर वी रियलाइज इट्स टू लेट एंड द चाइल्ड नीड्स वेरी सीरियस इंटरवेंशन? So, because you said, symptoms that are very, very important. अगर हम एज ग्रुप के हिसाब से देखें, so children who are very young, basically I'm talking about below 12. So the process of imbibing the education is reduced. So that is something very important to watch out for parents. That okay, ठीक है, online class, my child is attending that online class, but is my child imbibing that knowledge? क्या वो practically कर पा रहा है? Are they engaged in this? So few children are engaged, few are not. So is my child engaged? Is my child actually learning? Not to pass that class, but is my child actually learning? Because these are formative years. Whatever difficulty the child is facing, especially pre-primary also. So if the child is facing a lot of difficulties pre-primary because of lack of exposure, then that difficulty can show itself post also. So we have to pay attention कि कहाँ difficulty हो रही है, क्यों difficulty हो रही है. But difficulty होने का मतलब ये नहीं है कि इसमें बच्चे की गलती है and we can go ahead and scold the child or make the child sit for longer in front of screens, or that doesn't work with children. I say it time and again, it doesn't. Scolding, beating, all this will not work for your child. They'll only be scared, and they'll be more scared. And I'm sure they're already scared because everything has changed for these generations, right? Everything has changed for them. At least we as adults have seen some part of that normalcy. We've experienced it. We want to experience it. We know the difference. These children are slowly forgetting the difference. So we have to be very, very empathetic towards these children and keep reminding ourselves, pay attention, but not overly attentive. There's a fine line, like we were talking. So attentive, but not overly. Attentive to their needs, not their flaws. So whenever, say for example, ex child is not attending classes, on करके भाग जाते हैं बच्चे. All kids are doing this nowadays. So they'll switch on the screen and they'll mark their attendance and they'll want to run away. And that's how, young minds want to escape everything. It's okay. So understand क्यों नहीं कर रहा है. Is the subject being feeling boring? Is it something that they're not understanding? Is it not interactive enough? Get together with the teachers,
do something new, and that will be better. And if you cannot get together with the teachers or schools, you can make something, play games. Children learn best with games, best. Nothing other than games teaches them as well as games. Nothing is there that can compare itself to games when we talk about children. So just be aware and attentive to the needs, not to the flaws. As parents, we intend to, sort of be very attentive to the flaws. कि अच्छा ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है. Also think क्या कर रहा है, क्या क्या कर रहा है. So your child must also be doing a lot of very good things. I'm very sure. All children do fantastic things. We just fail to see them. डिसेंसी ऐसे लग रहा है कि आप मुझसे ही बात करें एज अ पेरेंट आई एम इम्बाइबिंग एवरी सिंगल थिंग यू आर डूइंग एंड यू गिवन सम वेरी interesting thoughts of how and how you can manage child. I have a few more questions related to this, but पहले अगर मैं आपसे ये समझ लूं कि अभी अगर हमें क्विक टिप्स में across the board, not just children, पेरेंट्स अभी चिल्ड्रन भी, इनको अगर तीन चीजें सुबह से, आपने हाइजीन की बात की जो बहुत खूबसूरत बात की कि एक स्पेस अलग अपने आप के लिए एलोकेट कर लीजिए, अपने बच्चे के लिए एलोकेट कर लीजिए जहां बैठ के हम काम कर सके. अगर हम बाकी अगर तीन या चार टिप्स फॉलो करना चाहिए, 3 4 इन अ होल डे, तो ये तीन या चार चीजें क्या सबसे ज्यादा जरूरी हैं जो नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए फॉर एवरीवन? तो पूरे दिन को हमने कुछ ऐसे डिवाइड किया है जो थोड़ा सा एक रिचुअल जैसा बन जाता है, बेसिकली रूटीन जैसा सा जो एक बन जाता है, छोटी छोटी चीजें जो रोज हमारे दिन में है, जिसमें से फर्स्ट चीज हो गई बेसिकली अपने मूड को शुरुआत अपने मूड की. मूड डिपेंड्स, जानती हूँ कि दिन में कुछ हो सकता है, बॉस कोई कुछ कह सकता है, घर में कुछ झगड़ा हो सकता है, और उस पर मूड डिपेंड करता है. कंप्लीटली अंडरस्टैंड. लेकिन शुरुआत दिन की कुछ ऐसे करें कि जैसे ही बिस्तर से उतरे अपने पैर जमीन पे रखें और बहुत दृढ़ता से खुद को कहिए कि आज का दिन अच्छा होगा, जैसे होगा पर अच्छा होगा. जस्ट दैट. उठिए, फ्रेश होइए, एक बहुत अच्छा कलरफुल ब्रेकफास्ट करिए जिसमें न्यूट्रिशन बहुत हो. आपके दिन की न्यूट्रिशन की ज्यादातर, जितना न्यूट्रिशन आपको चाहिए उतना आपके ब्रेकफास्ट में मान लीजिए एटलीस्ट 30 से 40% कवर हो जाए. इतना अच्छा ब्रेकफास्ट करिए सो दैट बाकी के दिन जो भी हो रहा है, आफ्टरनून में, डिनर में जो भी हो रहा है, वो आपको इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है. आपकी बॉडी रेडी है काम करने के लिए, ठीक रहने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए, ऑफ कोर्स इस कोविड एरा में. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद ऑफ कोर्स शाम को एक सिंपल रिचुअल रखिए, थोड़ा कामिंग रिचुअल, कुछ भी हो सकता है, चाहे साथ में चाय फैमिली के, चाहे अगर एंजाइटी हो रही है इंडिविजुअल्स को, हर हमें एज वर्कलोड बढ़ रहा है, बच्चों को आजकल बहुत एंजाइटी हो रही है, तो एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें लंबी सांस लेंगे तो 4 सेकंड के लिए अंदर और 6 सेकंड के लिए बाहर. ओके. उसके बाद लास्ट चीज जो होपफुली सारे एडल्ट्स भी मानेंगे, इस सोने से एटलीस्ट 1.5 घंटा पहले अपने फोन्स और सारे स्क्रीन्स को ऑफ कर दें. चाहे नींद कभी भी लगे, बट फोन या स्क्रीन का सहारा ना ले वो टाइम पास करने के लिए. तो बेड पे लेटने से 1.5 घंटा पहले अपने स्क्रीन्स को बंद कर दीजिए. इससे एक चीज, आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे आजकल फोन पे बहुत लगते हैं, दैट इज बीइंग अ रोल मॉडल फॉर देम. उनके लिए एक अच्छा रोल मॉडल रहेगा. प्लस इट विल बी गुड फॉर यू. इट इज वेरी गुड फॉर स्लीप. नींद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी आंखों में रोशनी ना जाए. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप या दीज मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए. बहुत बहुत खूबसूरत टिप्स आपने दिए हैं डिसेंसी जी. हमसे आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आई थिंक आपसे हम समय लेके हर हफ्ते अपने दर्शकों के लिए कुछ छोटी छोटी टिप्स जरूर लाते रहेंगे जिससे दर्शक इन्वॉल्व रहें और खुद की देखभाल और अपने मेंटल स्वास्थ्य की देखभाल भी खुद कर पाएं. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड जॉइनिंग अस टुडे ऑन द प्रोग्राम.
थैंक यू सो मच। हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर और हमारी YouTube पेज माय फैम हेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।